Good afternoon, class. My name is Dr. Sanjeev Singh, and today's topic is architecture of microprocessor 8085. Now, this figure indicate the architecture of an 8085. It comprise of an various blocks, and they are, this one is serial input output, and it is connected with an two pins, which is an serial input data and serial output data. In case of serial input data, the flows of the data is from the external world toward an microprocessor, and for an serial output data, the flow of the data is from microprocessor to an external world. That means an external peripheral devices. These are all 8-bit data buses, internal 8-bit data buses. These are all. This one is an 8-bit register, which is called as an accumulator. This is what temporary register, again is of an 8-bit, which is used for the storage of the data temporarily. And this is what arithmetic and logic unit, which is used to perform the functions such as addition, multiplication, division, subtraction, and a logical operations such as and, or, not, XOR. These are all logical operation which is performed by the ALU unit. And then after that, this is instruction register, which is of an 8-bit. And then after that, this is what instruction decoder and machine cycle encoding. And then after that, this is what all registers. These all are 8-bit registers, and which is used for the temporary storage of an data. They are W, it is again 8-bit register. Z, it is again 8-bit register. And then B, C, D, E, H and L, they are all 8-bit registers, and in pair they can be used up to an 16-bit. In pair, register pair can be used for the storage of an data of an 16-bit. And then after that, it has an two 16-bit registers, and they are stack pointer, it is again 16-bit, and program counter, it is also of an 16-bit. And then after that, increment and decrement address latch, 16-bit. And then address buffer 8-bit, and data and address buffer is of an 8-bit. These are lower order address buses which are multiplexed with the 8-bit data buses, and these are higher order address buses and are unidirectional. And this block is used for the generation of timing and control signal, and they are reset signal, as I have already explained in my first presentation. Now next is what direct memory access, status signal, control signal, clock signal, and journal signal, and these are the power supply signals. Now in this, we will consider what is registers. Registers. Now the basic constituent of any register is an flip-flop. It is an flip-flop, F-L-O-P flop. Now flip-flop is nothing but it is an 1-bit information storage memory cell. ठीक है, that means since 8085 is an 8-bit microprocessor, and all the registers
of an this 8085 microprocessor is of an 8 bit. So therefore, how many number of flip flop are required? Therefore, 8 number of flip flops are required for the storage of an 8 bit data. Therefore, हर कोई रजिस्टर जो है of an 8085 is consist of an 8 number of flip flop, and each flip flop store 1 bit of an information. ठीक है. Further, registers are further classified into, one is what? General purpose. First one. Second is what? For an temporary storage of an data. And third one is what? Special purpose registers. General purpose registers. There are 8 general purpose registers, and they are B, C, D, E, H, L. There are 6 general purpose registers, and all are of an 8 bit, and they are all used for the temporary storage of the data. And these register is also used in register pair. ठीक है. And the combination is what? B, C. When we used these register in a register pair, and the combination is what? B, C, D, E, H, L. ठीक है. और that means अगर मुझे we have to store the data, suppose 20H I have to be store it in 20 हायर ऑर्डर जो डाटा जो हायर ऑर्डर 8 बिट एड्रेस है वो किस में स्टोर होगा? इसमें स्टोर होगा. एंड लोअर ऑर्डर जो एड्रेस है, सॉरी डाटा, हायर ऑर्डर डाटा जो है दैट विल बी स्टोर्ड इन एन हायर ऑर्डर रजिस्टर, एंड एन लोअर ऑर्डर जो है डाटा वो स्टोर होगा लोअर ऑर्डर रजिस्टर में. इसी तरह डी और ई में भी, और एच और एल में भी. एंड एच एल पेयर रजिस्टर इज आल्सो यूज एज एन मेमोरी पॉइंटर. इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं? एज एन मेमोरी पॉइंटर भी यूज करते हैं, एंड विच इज आल्सो कॉल्ड एज एन स्क्रैच पैड रजिस्टर. ठीक है. टेम्परेरी डाटा रजिस्टर्स, दे आर, एक तो ये आ गया टेम्परेरी, and then W and Z registers ये भी आ गए. As the name indicate, temporary register, they are used for the temporary storage of an data. ठीक है. और इसी तरह W and Z again 8 bit registers हैं. They are also used for the temporary storage of an intermediate result. That means as an programmer we have nothing to do with these two registers W and Z. They are used by the microprocessor internally for the storage of an intermediate result. And then after that, special purpose registers, and they are register A, which is also called as an accumulator register, then flag register, and then instruction register. ठीक है. अब जब अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है जो वो परफॉर्म करती है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन, दैट मीन्स ऐड. अगर मैं इंस्ट्रक्शन लिखता हूं ऐड 04H, तो ये क्या करेगी? ऐड करेगी किसके? द कंटेंट ऑफ एन एक्यूमुलेटर. ठीक है. विद द कंटेंट ऑफ एन टेम्परेरी रजिस्टर. दैट मीन्स कोई भी इंस्ट्रक्शन जो है लाइक मूव करो, मैं लिखता हूं मूव A, B. ठीक है. नाउ दिस इंस्ट्रक्शन हैज टू पार्ट. वन इज व्हाट? मूव विच इज कॉल्ड एज एन ऑपरेशनल कोड. ठीक है. इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑपरेशनल कोड भी बोलते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन अप कोड.
ठीक है, that means this instruction has two part. One is what operational code, which is also called as an opcode, and then second part that is what called as an operand. Operand वो होता है जिसपे काम किया जाता है, and operational code जो indicate करता है what we have to do, हमें क्या करना है. That means in this case move जो है वो indicate कर रही है कि मुझे क्या करना है, copy करना है किसके, the content of an register B to an content to an register A. दैट मीन्स हमें क्या करना है, कॉपी करना है किसके, द कंटेंट ऑफ एन रजिस्टर बी टू एन रजिस्टर ए. ठीक है, जिस पे काम किया जाता है दैट इज व्हाट कॉल्ड एज एन ऑपरेंट, और जो काम करना होता है दैट इज कॉल्ड एज एन ऑपरेशनल कोड और एन अप कोड. ठीक है, और जो अप कोड है, ठीक है, वो क्या किया जाता है, फैच किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर को, और उसको कहाँ पे स्टोर किया जाता है, इन एन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में. And then after that this opcode is given to the instruction decoder. Decoder क्या करता है, डिकोड करता है. ठीक है, हमें काम क्या करना है, लाइक इन केस ऑफ एन मूव में केस में मुझे क्या करना है, कॉपी करना है किसके, द कंटेंट ऑफ एन रजिस्टर बी टू एन ए. ठीक है, और इन केस ऑफ एन ऐड इज ऑल्सो एन अपकोड. ठीक है, ऐड वाले केस में मुझे क्या करना है, जब इट इज गिवन टू द इंस्ट्रक्शन डिकोडर, तो डिकोड करेगा, मुझे ऐड करना है, एंड देन आफ्टर अकॉर्डिंगली वो क्या करता है, नंबर ऑफ मशीन साइकिल्स जो है एलोकेट करता है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ एन दिस इंस्ट्रक्शन दैट इज ऐड और एन मूव के लिए. ठीक है, एंड देन आफ्टर दैट अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट वो क्या करता है, सपोज ऐड करता है, तो ऐड करता है, एडिशन इज ऑलवेज बिटवीन द टू कंटेंट. ठीक है, बिटवीन द टू कंटेंट, एंड दीज टू कंटेंट आर स्टोर इन एन एक्यूमुलेटर एंड एन टेम्पररी स्टोरेज रजिस्टर. ठीक है, जैसे इनको ऐड करेगा 4 + 5. ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेगा, द रिजल्टेंट विल बी एन 9, और जो 9 है दैट विल बी कॉपी टू एन एक्यूमुलेटर एज एन रिजल्टेंट ऑफ एन दिस अर्थमेटिकल ऑपरेशन का. ठीक है क्लास, एंड देन आफ्टर दैट फ्लैग रजिस्टर. Now फ्लैग रजिस्टर इज अगेन, ये क्या है, 8-bit रजिस्टर है, और आउट ऑफ दीज 8 बिट्स जो 5 बिट हैं दे कैरी द सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, एंड दे आर लाइक D7 इंडिकेट करता है टू एन साइन फ्लैग, D6 इंडिकेट करता है टू एन जीरो फ्लैग, D6 इंडिकेट करता है किसको, टू एन ऑक्सिलरी फ्लैग, एंड D2 इंडिकेट करता है टू एन पैरिटी फ्लैग, एंड D0 जो है वो किसको इंडिकेट करता है, टू एन जीरो फ्लैग. ठीक है, दैट मीन्स आउट ऑफ 8 जो 5 बिट है ऑफ एन फ्लैग रजिस्टर वो क्या करती हैं, इंडिकेट करती हैं सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, वेयर एज D5, D3 and D1 are kept for an future advancement के लिए रखी गई हैं खाली. Now when sign flag will be set. ठीक है, ये कब सेट होगा, after the execution of an arithmetical and logical operation, if bit D7 of an resultant is, if bit D7 of किसका, of the resultant of an resultant is 1, अगर ये 1 है, the sign flag is set in a given byte. If D7 is 1, the number will be viewed as a negative number. ठीक है, अगर if D7 is 0, अगर ये 0 है तो then it will be viewed as a number, as an positive number. ठीक है, and then after that D6 which indicate to an zero flag. अगर मैं क्या करता हूँ, कोई अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ एंड द रिजल्टेंट ऑफ एन दैट ऑपरेशन इज 0, अगर वो 0 आता है क्या, रिजल्टेंट,
ठीक है, अगर मेरा रिजल्टेंट जो है वो 0 आता है तो उस समय ये फ्लैग क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज ये क्या रहेगा, रीसेट रहेगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट, D4। D4 इज एन ऑक्सिलरी फ्लैग। अब ऑक्सिलरी फ्लैग को कहाँ पे यूज करते हैं, इट इज यूज विद द BCD एडिशन के लिए, विच इज यूज फॉर द इंडिकेशन दैट द नंबर इज एन वैलिड और इनवैलिड नंबर। एज वी नो BCD नंबर 0 to 9 जो है वो क्या है, वैलिड BCD नंबर है। ठीक है, और जो ग्रेटर देन 9 है वो सारे के सारे क्या है, इनवैलिड है। ठीक है, और इनवैलिड नंबर्स को हम लोग क्या करते हैं, बाय एडिंग 6 इन दीज इनवैलिड नंबर्स दे आर कन्वर्टेड इनटू एन वैलिड BCD नंबर में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो दैट मीन्स इफ इन केस ऑफ एन एक्सोलरी, अगर लोअर निबल, दिस इज व्हाट D0, D1, D2 and D3, D4, that means if the carry from the लोअर निबल से कैरी क्या करता है, अगर जनरेट करके कैरी फॉरवर्ड हो जाता है टू एन हायर निबल की ओर, तो ये फ्लैग क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अगर कैरी फ्रॉम D3 टू, अगर यहां से कैरी जो है वो यहां पे चले जाएगा D4, दैट मीन्स एट द हायर निबल की साइड चले जाएगा, तो ये जो ऑक्सिलरी फ्लैग वाला, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। एंड देन आफ्टर दैट D2 विच इंडिकेट्स टू द पैरिटी फ्लैग। अब पैरिटी फ्लैग में क्या है, पैरिटी फ्लैग में क्या है कि आफ्टर द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन के बाद जो रिजल्टेंट आता है, ठीक है, रिजल्टेंट क्या में जो वो जो फाइनल आंसर है उसमें नंबर ऑफ वंस को काउंट किया जाता है। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ वंस आर इवन है अगर वो, ठीक है, तो ये फ्लैग क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अगर ऑड है तो ये रीसेट रहेगा। सेट मीन्स हैविंग वैल्यू 1 एंड रीसेट मीन्स हैविंग वैल्यू 0। एंड द लास्ट वन इज व्हाट, D0 विच इंडिकेट्स टू एंड कैरी फ्लैग। अब कैरी फ्लैग क्या है, जब हम लोग अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और रिजल्टेंट में लास्ट में कैरी जनरेट होता है, तो उस समय ये फ्लैग क्या हो जाएगा, ये फ्लैग जो है वो सेट हो जाएगा। अदरवाइज सेट मीन्स 1 हो जाएगा, अदरवाइज ये क्या रहेगा, रीसेट रहेगा, दैट मीन्स 0। नाउ इंटरप्ट कंट्रोलर। Interrupt controller. Now, as we know, 8085 has 5 hardware interrupts, 5 hardware interrupts, and they are trap, RST 7.5, 6.5, 5.5, and INTR. Whereas trap is a non-maskable interrupt and having the highest priority, and when we move from this side to this side, the priority जो है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, and they are also used to connect the external hardware devices to communicate with the 8085 microprocessor. And then after that, this is what program counter. Program counter is an 16-bit register which is used for the storage of an address which is to be next address which is to be executed. बेसिकली प्रोग्राम काउंटर इज एन 16-bit है और हम लोग इसलिए यूज करते हैं, इट इज यूज टू स्टोर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विच इज टू बी एग्जीक्यूट बाय द माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, एंड देन आफ्टर दैट स्टैक पॉइंटर। अब स्टैक पॉइंटर इज व्हाट, stack is a reserved area of the memory in the RAM where temporary information may be stored. A 16-bit stack pointer is used to hold this stack pointer is used
to hold the address of the most recent stack entry, and that is also called as an top of the stack. Now this is what stack is, nothing but the reserve portion of the memory, ठीक है, and SP which is an 16-bit register which is used to hold the starting address of an memory. Suppose the starting address is what 4000H, ठीक है, और जैसे ही हम लोग इसमें डाटा स्टोर करते हैं तो वो क्या करता है, इट ऑलवेज डिक्रीमेंट करता है एंड इट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हायर टू एंड लोअर एड्रेस साइड, ठीक है, और ये होल्ड करता है किसका एड्रेस, एसपी क्या करता है अपडेट करता है अपने आप को एंड होल्ड करता है किसका एड्रेस ऑफ द मोस्ट रिसेंट डाटा एंट्री विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन टॉप ऑफ द स्टैक which work on the principle of LIFO, LIFO, which is called as an last in first out. And then after that this block which is an timing and control signal, various signals has been indicated in this block which is used for the synchronization of and various operations that are performed by the microprocessor 8085. Now in this reset in and reset out, this is used to reset the microprocessor, ठीक है, द मोमेंट माइक्रोप्रोसेसर को हम लोग रीसेट करेंगे द कंटेंट ऑफ द कंट्रोल प्रोग्राम काउंटर, दैट इज व्हाट दिस, ये क्या हो जाएगा रीसेट हो जाएंगे एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द 0000H विच इज द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द मेमोरी, ठीक है, दैट मीन्स वो क्या करेंगे आफ्टर द जैसे ही हम लोग माइक्रोप्रोसेसर को रीसेट करेंगे प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा अपने आप को अपडेट करेगा या रीसेट करेगा किसके साथ विद द स्टार्टिंग एड्रेस 00 एंड फ्रॉम दिस मेमोरी लोकेशन से वो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा एंड वेयर एज रीसेट आउट जो सिग्नल है विच इज यूज्ड फॉर रीसेट करने के लिए किसको ऑल द पेरिफेरल डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड विद द माइक्रोप्रोसेसर. And this is what next is what DMA, that is what called as a direct memory access, and this is used to indicate that another master is requesting to an microprocessor 8085 for the address data and control buses, ठीक है, एंड ये क्या करेगा रिस्पॉन्ड करेगा रिक्वेस्ट जनरेट करेगा ऑन एंड होल्ड पिन एंड इस रिक्वेस्ट को जो है माइक्रोप्रोसेसर रिस्पॉन्ड करेगा ऑन एंड होल्ड एक्नॉलेज पिन पे. एंड देन there are certain status signals which are IO/M bar S1 S0. This is used to indicate the operation machine cycle. कौन सा machine cycle is performed by the microprocessor, whether it is an upcode fetch, memory read, memory write, or input output read, or an input output write, and accordingly address latch enable, ठीक है, signal which is generate by the microprocessor 8085 during that T1 time period of the machine cycle. ये क्या करता है एक्ट करता है इट गोज हाई, ठीक है, दैट मीन्स ड्यूरिंग दिस पीरियड जो लोअर ऑर्डर एड्रेस बसेज हैं विच आर मल्टीप्लेक्स विद द एड्रेस एंड डाटा बसेज, ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड जो एड्रेस बसेज हैं AL सिग्नल जो है हाई हो जाएगा और एट द सेम टाइम पे जो एड्रेस बसेज हैं, ठीक है, जो मल्टीप्लेक्स एंड डाटा बसेज के साथ उस समय ड्यूरिंग T1 टाइम पीरियड में वो एक्ट करती हैं एज एन एड्रेस बसेज एंड देन आफ्टर दैट दे आर कन्वर्टेड टू एन डाटा बसेज. एंड दिस इज व्हाट कंट्रोल रीड और राइट ऑपरेशन, ठीक है, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, माइक्रोप्रोसेसर जो है वो परफॉर्म करता है आइदर रीड और एन राइट ऑपरेशन, दोनों साइमल्टेनियस ऑपरेशन नहीं होते हैं इन दिस 8085 माइक्रोप्रोसेसर वाले केस में, और जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा वो उस समय एक्टिव लो सिग्नल होगा. एंड नेक्स्ट इज व्हाट रेडी सिग्नल. रेडी इज यूज्ड बाय द माइक्रोप्रोसेसर टू सेंस दैट द पेरिफेरल डिवाइस इज रेडी टू ट्रांसफर द डाटा और नॉट, अदरवाइज वो क्या करेगा वेट करेगा जब तक ये सिग्नल हाई नहीं हो जाता, दैट मीन्स पेरिफेरल डिवाइसेस जो है वो रेडी नहीं हो जाती फॉर द ट्रांसफर ऑफ द डाटा. दिस इज यूज्ड बाय द ट्यून सर्किट, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट clock signal which act as an system clock for or the peripheral devices which is connected with the microprocessor.
Thank you, class. Thank you.